Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. As you know, we have been discussed about English language skills. Today's lecture is based on language session number 3, that is, what is speaking skill. Let's see first of all what are the 4 skills that are important for improving the English language. There are 4 skills of English language that is called LRSW. L stands for listening, R stands for reading, S stands for speaking, and W stands for writing. These 4 skills further divided into 2 subcategories. Number 1 called productive skills and number 2 is called receptive skills. In productive skills, we have included speaking skills and writing skills. Further, in receptive skills, we included listening skills and reading skills. अब हमें मालूम होना चाहिए कि receptive skills क्या हैं. Listening and reading both rely on each other. And productive skills are just like writing and speaking are more complex, and for this the proper knowledge of language is required. But all of the 4 skills in English language are important and support each other. ऐसा नहीं है कि हम एक सिंगल स्किल को सीखने के बाद हम समझ लें कि that we have mastered in English language. No. These 4 skills are work parallel. All the 4 skills are interconnected and these skills cannot be taught independently. All 4 skills facilitate language learning and language learning is like learning the driving skill. आपको हर चीज़ आनी ज़रूरी है. लैंग्वेज को सीखने के लिए ये 4 कंपोनेंट्स या 4 स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं. You cannot teach driving by sitting outside the car and give instructions. Means to say we have to do it in a proper way. हमें उसको सुनना भी है, बोलना भी है, पढ़ना भी है और लिखना भी है. Speaking skill. Speaking is productive skill. As you know, productive means इसमें आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, हम बोल कर बात समझाते हैं. There are 3 types of speaking. हम 3 तरह से गुफ्तगू करते हैं. Number 1 interactive way, number 2 partially interactive way, and number 3 non-interactive way. For example, interactive जैसा कि नाम से जाहिर है, in this type you are fully involved in discussion, dialogues, communication and conversations. Number 2 partially interactive. Here you are able to convey your message in partially way. आप चीज़ों को मैक्सिमम सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं. आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर्स. नंबर 3 इज़ नॉन इंटरेक्टिव. नॉन इंटरेक्टिव मीन्स जिसमें आपने जस्ट या तो बोलना है या सिर्फ सुनना है, just like sermons and speeches. So there are these main 3 types of speaking that we usually and commonly use in our daily life. Now, what are the techniques to develop speaking skills? हम speaking skill को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, especially for improving the English language? Number 1 is communicative teaching. Number 2, mistake should be welcome. Number 3, action with speaking. Number 4, activities with imitating, answering verbal cues, interactive conversation, oral presentation. Number 5, content of speaking should be practical and usable in real life. Speaking को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं in your daily life? आप ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें. Mistakes अगर होती भी हैं तो उसको आप avoid करें, क्योंकि first of all हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसमें फौरी तौर पर perfection नहीं आ सकती. Actions with speaking. आप अपनी बोलचाल को अपने अमल से और मुख्तलिफ किस्म के एक्शन से भी इम्प्रूव कर सकते हैं. एज वेल एज डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, टास्क यूज़ होते हैं जिसके अंदर आप इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वर्बल क्यूज यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निक है. एज वेल एज कंटेंट ऑफ स्पीकिंग शुड बी प्रैक्टिकल हो, रियल लाइफ से लिंक हो. जितना ज़्यादा कंटेंट आपकी रियल लाइफ से लिंक होगा आपको समझने में आसानी होगी और आप मैक्सिमम उसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे, प्रॉपरली उसको बोल सकेंगे. Number 6, provide appropriate feedback but don't interrupt communication. Number 7, address both interactive fluency and accuracy. Number 8 is based on encourage strategies like asking for clarification, paraphrasing, gestures and initiating.
सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, जस्ट लाइक आप उसका फीडबैक लें, उसको दरमियान में बोलते हुए इंटरप्ट मत करें, और इसके अलावा उसको बेहतर करने के लिए, फ्लुएंसी लेकर आने के लिए आप उसको इनकरेजमेंट दें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए। पैराफ्रेजिंग है, लाउडली बुलवाना क्लास में, कोई पैराग्राफ पढ़वाएं, लाउडली स्पीक करवाना, उसको इन्वॉल्व करें डिफरेंट डिस्कशंस में, डायलॉग में। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ क्लासरूम में अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे मैक्सिमम इफ़ेक्ट आता है फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ एनी लैंग्वेज। Now, how to reduce fear of speaking English? There are different types of fears and hesitations a person and students faced for speaking English language. Number one, reduce such fears by maintaining a friendly atmosphere in the classroom and providing opportunities for students to practice alone or with other students. इस किस्म के फेयर्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में आते हैं, उसमें यह है कि क्लासरूम में थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखें, क्लासरूम में इस किस्म की प्रैक्टिसेस करवाएं, डिस्कशंस करवाएं कि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को प्रमोट करें। नंबर टू, द स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पीयर्स हु फेस द सेम सिचुएशंस। ऐसे इस ग्रुप बनाएं जो कि हेजिटेट करते हैं या डरते हैं बोलते हुए लैंग्वेज को। इससे क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे को फेस भी कर सकेंगे। पीयर ग्रुप होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ों में इंसान मोटिवेट होता है और वो रिलेक्टेंट नहीं होता और वो चीज़ सीख जाता है। नंबर थ्री, स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड होल्डिंग ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें आप क्लासरूम में। जैसे वो कोई चीज़ प्रेजेंट अगर करता है, क्वेश्चन आंसरिंग अगर होती है या ग्रुप डिस्कशन होती है, तो मैक्सिमम उसको वेज प्रोवाइड करें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करे। जितना ज़्यादा वो मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेगा, उसका फियर और हेजिटेशन जो है वो रिड्यूस होगी। नंबर फोर इज़ फ्रीक्वेंट क्लासरूम प्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस इनेबल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू diagnose the weak points and then find the remedy to solve those points. क्लासरूम में अगर फ्रीक्वेंटली बेसिस पर डिस्कशंस होती हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो इससे बहुत से वीक पॉइंट पता चलते हैं और आफ्टर डायग्नोज दोज वीक पॉइंट्स उनको फिर इम्प्रूव किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देयर आर सम बैरियर्स व्हाइल स्पीकिंग। कुछ बैरियर्स भी आते हैं। हम जब बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें समटाइम्स अनक्लियर मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन। नंबर थ्री, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। नंबर फोर, not understanding the receiver. Number five, words have different meanings for different listeners. जिस तरह से डिफरेंट मौक़ों पर डिफरेंट बातचीत जो होती है सिचुएशन के हिसाब से या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिफरेंट हो जाती है, उसमें हो सकता है कि स्पीकिंग स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए या बैरियर आए। बट इफ़ योर वोकैबुलरी इज़ गुड, अगर आपकी फोर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली फोर स्किल्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। एक स्किल को बेहतर बनाने के लिए दूसरी स्किल्स भी आपको सपोर्ट करती हैं कोई चीज़ समझने में। तो स्पीकिंग स्किल को आप इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कि मैक्सिमम आप उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, बातचीत का हिस्सा बनाएं। किसी भी किस्म की फियर और हेजिटेशन को दूर करने के लिए आप उसको मैक्सिमम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करें। So this is the third skill that we have been discussed in this lecture. I hope you people understand this. Thank you. Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.